my channel. In this video, we will discuss about light. What makes the things visible? So, in this video, हम complete detail में समझेंगे what is reflection, types of reflection, terms related to the reflection, laws of reflection और हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए उनके नोट्स भी लिखेंगे पैरेलल टू दैट. सो सबसे पहले हम इसी को डिटेल में समझेंगे कि व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल. ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें डार्क रूम में अगर हम जाते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, बट अगर हम ऐसे रूम में जाते हैं जहां लाइट अवेलेबल है वी कैन सी एवरीथिंग. सो नंबर 1 क्वेश्चन यू कैन आस्क व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल. सो we can see the object when light entered to our eyes from any object. Suppose I have a object, this is a object. इस object की मुझे I want to see this object. Possible है कि अगर इस object खुद अपनी लाइट इमिट करता है, इट मीन्स ये ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद इमिट करता है, ये लाइट मेरी आईज पे एंटर होगी और आई कैन सी दिस ऑब्जेक्ट. बट ये भी पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट ऑपेक हो, जो कि अपनी लाइट इमिट नहीं कर रहा है. उस सिचुएशन में अगर कोई और सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल बल्ब, सनलाइट या कोई भी, तो अगर कोई और मेरे पास में सोर्स ऑफ लाइट अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो लाइट उस सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ पे एंटर करेगी और यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आईज पे पहुंचती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से देख पाते हैं. सो इट मीन्स हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है रिफ्लेक्शन, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट एंटर टू आवर आईज, हमारी आईज पे पहुंचती है और हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है. तो इट मीन्स व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल. We can see the things when light from the object entered our eyes. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by the object. This is plane mirror or any smooth surface. This is our incident ray. What is incident ray? The light ray which strike any surface. This light ray strike this surface, so this is known as incident ray. And the ray that come back from the surface after reflection ये वापस आ रही है, this is known as reflected ray. And this is perpendicular, this is known as normal. Angle between incident ray and normal is known as incident angle. Angle between normal and reflected ray is known as reflected angle. So students आप ये देख सकते हैं कि in this figure this is incident ray, ये किसी सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे इस तरीके से बाउंसिंग बैक हो रही है. ये इंसिडेंट एंगल है, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल. सो फर्स्ट हम इसकी टर्म्स को समझेंगे, इनकी डेफिनेशंस को लिखेंगे. सो स्टार्ट राइटिंग नोट्स. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. द रे that comes back from the surface after reflection is called reflected ray. Normal is a line drawn perpendicular to the surface of mirror or any object from the point where incident rays meets the surface of the mirror or any object. Angle between incident ray and normal is called incident angle. Angle between reflected ray and normal is called reflected angle. Laws of reflection. First law of reflection. According to the first law, this is incident angle, this is reflected angle. It means incident angle is always equals to reflected angle. जितना भी incident angle होता है उतना ही reflected angle होता है according to the first law of reflection. And second law of reflection, this is incident ray, this is normal and this is reflected ray. According to the second law of reflection, incident ray, normal and reflected rays all lies in the same plane. It means we can say
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही रे एक ही प्लेन में अवेलेबल होती है. सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Laws of reflection. First law, the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incident lie in the same plane. Second law, the angle of incident is always equal to the angle of reflection. Types of reflection: regular reflection and irregular or diffused reflection. Regular reflection, when reflection take place at the smooth or shiny surface. This is smooth and shiny surface. अगर इस पे reflection होता है, so this is incident ray and this one is reflected ray. After reflection, rays जो होगी वो एक दूसरे के parallel में होगी. तो it means we can say कि when reflection take place at the smooth and shiny surface, तो इस तरीके से reflection होगा जो कि सारे reflection laws को follow करेगा. So that is known as regular reflection. In irregular or diffused reflection, when reflection take place at the rough surface, so हमेशा this is incident ray and this is reflected ray. ये एक दूसरे के पैरेलल में नहीं होगी और laws of reflection भी फॉलो नहीं करेंगे. तो this type of reflection जो होता है उसको हम irregular और diffused reflection कहते हैं. Types of reflection: regular or specular reflection. When the reflecting surface is very well polished and smooth, the light that falls on it is evenly reflected in only one direction. This phenomena is known as regular or specular reflection. Diffused or irregular reflection. When the reflecting surface is irregular, the ray of light that falls on it are scattered in all directions. That is called irregular or diffused reflection.